Hello student, welcome to online class for standard 5th. Today we are going to learn subject English and unit 1 vocabulary and our subtopic number 3 suffixes. Okay, so keep your Navneet book with you and let us start our today's session. Today we are going to learn suffixes. What is suffixes? The letters added at the end of the words to form new words are called suffixes. Okay, so in our first lecture we have to learn. In our first lecture we learn about parts of speech. There are so many parts of speech: adjectives, nouns, verbs and adverbs, etc. etc. So we can form nouns from adjectives, nouns from verbs, adjective from nouns, adverbs from adjectives and so on by adding suffixes. That is, we can interchange the parts of speech by adding suffixes. So students, sometimes a slight change has to be made in the spelling of the word before adding the suffix. So this is called the word building. So I will explain it in हिंदी. सफिक्स मतलब क्या होता है कि एक वर्ड जो होते हैं जहाँ पे कुछ नए लेटर्स ऐड करने के बाद जो नया वर्ड फॉर्म अप होता है उसे सफिक्स कहते हैं. सो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो हमने सीखे थे, बराबर है. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, जैसे कि एडजेक्टिव थे. ओके, एडजेक्टिव हमने सीखे हैं, एडवर्ब हमने सीखे हैं, वर्ब्स हमने सीखे हैं. सो देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो जब भी हमें ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, इन्हें सफिक्स जोड़ के. सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली एक ही बात है कि सफिक्स इज एडेड आफ्टर द वर्ड. ओके, जो शब्द के बाद में ऐड होता है उसे सफिक्स कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज हो जाता है, कभी कभी सफिक्स हम जोड़ते हैं तो स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है, तो इसे वर्ड बिल्डिंग ऐसे कहते हैं. व्हाइल स्टडिंग द सफिक्स लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स. फर्स्ट वन, स्टडी द वर्ड केयरफुली. ओके, सेकेंड वन, अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क्ड in the question and relate it to the context. Next one, you have to remember, select the correct option for your answer. Next one, the answer should be meaningful word, phrase or sentence. Okay, and the fifth one, it should be in use with correct spelling. Next one, reconfirm before you mark the correct option. So student, see the page number 14 in your Navneet book. There is a one chart, formation of adjective. Okay, so formation of adjective means adjective can be formed from other words by adding suffixes as given below. So there is a 3 column. First one is suffixes, second one is words and the third one is adjectives. So middle one, that words is depend, accept, hope, faith, danger, fame. These words are a verb and we have to interchange it into adjectives by adding a suffixes. So first, in first column, see the suffixes able, full, ous, less. Fifth one is ish, sixth one is ive, seventh is al, ary, ninth one is y, 10th one is ly, 11th is ed and 12th one is ing. सो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ब्स है, इन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ इन सफिक्सेस को हमें इस वर्ड के पीछे हमें ऐड करना है. सो एक नया वर्ड यहाँ पे फॉर्म अप हो जाएगा. सो लेट अस से डिपेंड, जैसे कि आप एडजेक्टिव में देख सकते हैं, डिपेंड मीन्स डिपेंडेबल. सो इसका सफिक्स, व्हेनेवर वी ऐड द सफिक्स, द न्यू वर्ड व्हाट विच वर्ड वी हैव गॉट, डिपेंडेबल. ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल. Hope, next one is ful, full, hopeful, faithful. Next one is danger, dangerous, fame, famous. Less, harmless, careless. Childish, girlish. Next one is attractive, impress. Okay, impressive. Region, regional. Season, seasonal. Okay, ARY, imagine, imaginaries. imagine and see the spelling adjective imaginary, it is added ARY.
okay. Custom, customary. Sleep, sleepy. Dust, dusty. Year, yearly. Friend, friendly. Gift, gifted. Talent, talented. Interest, interesting. And bore, boring. ओके सो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो वर्ड मीनिंगफुल हो जाएगा वो हमें वहाँ पे सफिक्स ऐड करना है. सी द पेज नंबर 15. सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अदर वर्ड्स एंड इवन फ्रॉम अदर नाउन्स बाय एडिंग सफिक्सेस एज गिवन बिलो. सी द चार्ट. देयर इज अ 3 column. First one is suffixes, middle one is words, and third one is nouns. So the middle column, watch this middle column. The words ugly, bitter, judge, govern, king, wise, these are the adjectives, okay. And whenever we add these suffixes nes, nes, meant, dom, shun, sion, tion, cy, so whenever these suffixes we add, we got the nouns, okay. See here, ugly, ugliness, bitter, bitterness, judge, judgment, govern, government, okay. King, kingdom, wise, wisdom, oppress, oppression, invade, invasion, okay. Act, action, describe, description, infant, infancy, okay. Frequent, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे infant है so t नहीं है, यहाँ पे हमने slightly इस वर्ड को चेंज करके infancy किया है. Frequent, t नहीं है so t नहीं है so यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किया हुआ है. इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस. पेशेंट, पेशेंस. अटेंड, अटेंडेंस. एलिगेंट, एलिगेंस. स्कॉलर, स्कॉलरशिप. फ्रेंड, फ्रेंडशिप. गर्ल, गर्लहुड. चाइल्ड, चाइल्डहुड. प्रपोज, प्रपोजल. रिमूव, रिमूवल, ओके. So next, third one is formation of verbs. Verbs can be formed from other words by adding suffixes. See again there is a chart. See third column. See the column. Middle one is a noun. Okay. So whenever we add these suffixes to noun, we get a verbs. Strength, strengthen. Wide, widen. Regular, regulate. Different, differentiate. Beauty, beautify. Simple, simplify. Critic, criticize. Fertile, fertilize, okay. Turn on next page. See the page number 16. Fourth one is formation of adverbs. Adverbs can be formed by adding the suffix ly. See here again a chart. The middle column words is a adjective, and whenever we add the suffix ly we get the adverbs. Quick, quickly. Clear, clearly. Beautiful, beautifully. And calm, calmly, okay. So ये जो सफिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान में रखनी है. आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इस वर्ब को सफिक्स जोड़ के आपको एडजेक्टिव करना है या एडजेक्टिव को सफिक्स जोड़ के आपको नाउन करना है. सो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा और ब्रैकेट में आपको एक वर्ड दिया जाएगा. सो यू कैन ऐड दैट सफिक्स एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड देयर, ओके. सो let us see some examples on this. See the first one. Which of the following words cannot take the suffix ly to form a new word? So यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम ly cannot take the suffix ly to form a new word, जिसे हम ly suffix नहीं जोड़ नहीं सकते न्यू वर्ड फॉर्म के लिए. So वो कौन सा होगा? Because fast. Option number 3, fast, because the prefix ly cannot be added to fast to make a new word. See, a student, in our first lecture, in our first topic, word formation, I have given you some chart for prefix and suffixes. Prefix हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. So next one is find the odd man out from the set of words given below. Flower, bigger, brighter, and larger. Okay. So here, which is the correct option? The correct option is option number 1. Flower is a word, but here bigger, brighter and larger er. Okay, यहाँ पे कौन सा दो वर्ड यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, दो लेटर, तो वो है er. So यहाँ पे er does not work as a suffix. अभी हमने जो भी चार्ट यहाँ पे पढ़े हैं, देखे हैं, so उसमें कहीं पे आपने er देखा है नहीं. So er जो है वो कभी सफिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें
ऑड मैन आउट है वो फ्लावर, और फ्लावर में ई आर नहीं है, इट्स अ वर्ड फ्लावर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स. इसमें हमें ऑड मैन आउट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मेलिटी, फॉरगिवनेस, फाइनल एंड फोर्टिफिकेशन. सो हियर ऑप्शन नंबर सी, द ऑप्शन नंबर 3, फाइनल, बिकॉज इट इज अ रूट वर्ड. ऑल अदर हैव सफिक्सेस. See the LITY, formality, forgiveness, NESS, fortification, TION. These are the suffixes. Only final does not have a suffix. Okay, so that's why odd man out is option number 3. See the next question. Which suffix can be added to follow to form a noun? Choose the correct option. So इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सफिक्स जोड़ने के बाद हम नाउन फॉर्म अप कर सकते हैं. सो फॉलो को अगर हम यहाँ पे सफिक्स जोड़ेंगे तो कौन सा हम वर्ड यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि हमें नाउन यहाँ पे फॉर्म अप करना है. सो ING, LY और OR, और so we cannot add this. We will make follow a verb into flower a noun. So that's why we are adding option number 4, ER, क्योंकि हमें यहाँ पे नाउन फॉर्म अप करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ER जो है वो सफिक्स यहाँ पे ऐड किया है. ओके, नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स कैन टेक सफिक्स ING. ओके, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेट ऐसा है जिसे हम सफिक्स ING ऐड कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं. लायन, लायनिंग, वेटर, वेटरिंग, चाइल्डिंग, brothering, diffing, harding. Though we cannot form these words by using ING. So but option number 1, farm, farming, okay, and surf, surfing. So here option number 1 is the correct answer. Okay, again we will turn our Navneet book. See the page number 16. There is a sample questions. Okay, see the first question. Choose the correct suffix for the following word. Manage के लिए हमें एक correct suffix जो है वो हमें choose करना है. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट, MENT, meant, ness, full and ISH, ish. So हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे मैनेज के लिए? मैनेजमेंट इज द करेक्ट वर्ड. मैनेजनेस, नो. मैनेजफुल, no. Managish, no. So here management is the correct word. Okay, next one, choose the suffix for the given words to make a sensible sentence. The boy was praised by everyone for his dash action and into bracket thought. So यहाँ पे हमें आपको क्या देखना है कि क्या सेंटेंस हमें एग्जैक्टली पूछा गया है. The boy was praised, okay, by everyone. जो बॉय है उसे सबसे आशीर्वाद मिला है कि थॉटलेस हो सकता है या थॉटफुल हो सकता है. तो यहाँ पे उसके थॉटफुल एक्शन के लिए एवरीवन हैज प्रेज्ड हिम. सो हियर thoughtful is the correct answer. Okay, whenever you read that sentence, just identify what is the meaning of that sentence. Okay, so next one is choose the correct word formed by adding the suffix OUS to the word space. So जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें कुछ जो स्पेलिंग है वो स्लाइटली चेंज करने पड़ते हैं सफिक्स यूज करने के लिए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस हमें दिया है और उसे सफिक्स OUS ऐड करना है. सो विच वर्ड इज सुटेबल हियर? हियर इज अ स्पेशियस. ओके, द करेक्ट स्पेलिंग इज SPACIOUS. ओके, सो स्टूडेंट आपको ये जो सफिक्स यहाँ पे आपके नवनीत बुक में दिए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं और जो आपको पूछे जाएंगे जो सवाल होंगे. सो यहाँ पे जो सवाल आपको पूछे जाएंगे तो उनको करेक्ट सफिक्स कैसे ऐड करना है ये आपको इजीली आ जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट की सफिक्स द कंसेप्ट ऑफ सफिक्स इज क्लियर फॉर यू. सो वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट, थैंक यू एंड स्टे सेफ.